Hello everyone, good evening. Thank you for joining in. Just a standard disclaimer before we start. The things that we will discuss is our personal opinions. Nothing is buy or sell recommendation. So for today, we will discuss more about financials and chemicals. And we have Aditya Shah today. Aditya Shah is a CFA charter holder and the founder of Hercules Advisors. He is a leading analyst in the for chemicals and financials across many TV channels. Like I hope you have already seen him on ET Now and NDTV Profit, right? And he has a very rich experience in both financials and chemicals. So we will discuss about both the sectors. So Aditya, do you want to start? Yeah, so I will give a brief introduction about the financial sector, what is it doing, and then I'll talk about chemicals, and then you can shoot some questions, and then we can open up. That's how we Right, can right. do it, Perfect. Yeah, right? perfect. So Uh, let's start with so financials first. so for financials, we've seen we are in the middle of a lending cycle where uh, secured book and high quality retail is doing exceptionally well. Unsecured retail and particularly unsecured personal loans and micro lenders are doing pretty bad. NPS there have peaked out, but stress is still there. Stress will come down slowly and steadily. So from my perspective, in the middle of a lending cycle where larger banks continue to do exceptionally well with respect to asset quality, with respect to deposits, with respect to advances or the loan growth, uh, micro lenders face tough challenges. Some smaller banks also continue to do exceptionally well. Gold lenders continue to do exceptionally well. So that is that. Some PSU companies are also doing well, but PSU companies obviously they are coming on the back of huge write-off of loans. So, from my perspective, PSU companies are doing well, but you need to be really very careful. There's divestment of IDBI Bank that is also coming up. That could also re-rate the PSU banks if the government is able to successfully divest IDBI Bank. Although the seeds are there where NPAs have been cleaned up, where a lot of cleanup of IDBI Bank has really happened. So from my perspective, PSU banks uh, could get re-rated if there is a divestment process that is successful, but is that has a lot of ifs and buts. So from my perspective, in the entire financial sector, I am really very positive. Uh, Larger banks will continue to do well. Some of the smaller banks are doing well and will continue to do well. So you need to have them inside your portfolio. They will do well. And mind you, over the last 1 or 2 months, lenders and large caps are leading the market higher. So from my perspective, positive on the lenders, positive on the financials per se. Micro lending cycle has created some sort of a bottom, but it will take some amount of time before that bottom is finally in place and we start to move up. That could be 6 months, 12 months. Nobody knows as such. But a broad bottom where peak NPAs are behind in the micro lenders is something that is there. So, from my perspective, positive on the lenders. Bank should be a part of your portfolio, and that's how it is. तो आप lenders Right. पे पूछ सकते हो कुछ सवाल. हाँ, Yeah. बताइए. So, like Aditya, basically, we have seen a very tightened liquidity environment in 2024 and before that, right? But in last 8 to 9 months, we have been seeing like RBI is infusing a lot of money in the system via various means, and we have also seen a decent interest rate cuts in past 9 months. So, where do you think, like, are we at the again the start of the credit cycle? Could we call it a phase one, where like maybe smaller banks may like struggle a bit, but maybe the good credit cycle is uh, in way in front of us, maybe 2 or 3 quarters on the line. How do you look at that part? So, from my perspective, the huge leg up of the credit cycle started somewhere in 21 and 22 after the COVID cleanup, where we had slumped to about 40, 50 years of
low credit growth. So in Right. 2020 and 2021, the credit cycle was at the bottom, and we had seen the lowest credit growth that we had seen over the last 30, 35, 40 years. So from there on, we have picked up credit growth. Credit growth has picked up in 22, 23, and 24, and we are in the middle of a huge credit cycle that is playing out. That credit cycle is being led by the larger banks, be it HDFC, ICICI, Kotak, or Axis, SBI. Those banks are leading that credit cycle where all of them are growing at about 10 to 15%, and then come the smaller lenders per se. So, with respect to interest rate, we are at the bottom of the interest rate cycle, and from here on, as inflation, according to RBI, continues to be low, RBI will need to as the RBI will need to raise interest rates at some point in time, and they will. So that is one aspect of it. But any which way, besides this, the credit growth will continue to be strong at least for the next 2 to 3 years. So within the lending space, it's a very peculiar space. There are a whole lot of lending spaces available. There's secured retail where housing loans and gold loans are there. There's unsecured retail where there's microfinance and unsecured loans and personal loans. Uh, and then there's commercial vehicle lending. So from my perspective, the major risk comes from unsecured retail lending. Most of these banks are facing tough time there. Even larger banks are facing tough time there. Secured lending, not so much. No problem there because it is asset backed. If a customer defaults, you can obviously go ahead and sell off the assets and recover your money there. So from my perspective, we are in the middle of the cycle. A diversified lender will do pretty well. A concentrated lender like a microfinance lender or a gold lender would face certain challenges, but gold lender anyway does not face any challenge because of highly liquid asset, which is gold. So from my perspective, a diversified lender would do pretty well. And as a contra bet, microfinance is obviously a contra bet, but one must be really very careful on picking and choosing what type of a lender that you want to bet on, because microfinance does have the problem that when the cycle is down, these companies keep making losses, and once these companies keep making losses, it becomes really hard for some of them to sustain. Some companies are really finding it very difficult, like Pandana Surti or Fusion Microfinance. They will recover, but the damage was really bad for all of these companies. So from that perspective, you need to be very careful. We are in the middle of a credit cycle. A diversified lender for growth type of investment, microfinance lender for a contra type of investment. Right, right. So again, Aditya, like we have seen a significant rally in PSU banks, right? While a lot of bigger, larger banks, like except ICICI, hasn't moved much in terms of stock price movement. I'm talking about. So how do you see the risk to reward ratio in like both PSU and private banks? And most of the private banks are trading below their 10-year book value. So, private sector banks are expensive. HDFC, ICICI, Kotak, they are expensive stocks. Some of them, of course, HDFC has got merger-centric problems, but private sector banks do continue to trade expensive. ICICI Bank trades at about 3.5 times. HDFC also trades at about 2.5, 3 times, but it is lower than what it used to trade at. It is not cheap by any means. Kotak is also trading at a lower valuation than what it used to. SBI trades at about nearly about 1.5 to 2 times price to book. So the valuation on larger private sector banks as well as SBI, which is a larger PSU bank, is not really very cheap. A lot of this growth is also priced in. In the last 2 years, ICICI Bank has practically doubled. Uh, so a lot of the growth that is going to come in is priced into a lot of these stocks. These stocks will be growth type of a stocks where they will continue to give steady returns, 10, 15, 20%, those kinds of returns that will come from the larger banks. Now coming to PSU banks, of course for PSU banks, the government took a massive cleanup in 20 where COVID was used to flush off all the NPAs out of these banks. Now these banks have a clean balance sheet, and because of the great franchise that most of these banks really have, they are continuing to grow.
Their profits are continuing to grow. In fact, IDBI Bank had a profit growth of about 100% this quarter because of low NPAs. So, uh, PSU banks are growing well, but most of the leg of re-rating for PSU banks is already done. The next leg of re-rating could come in, as I said, if in the shorter term there could be a divestment of one of the PSU banks, which is IDBI Bank, is on the block, as the government has already shown its intent, and that could lead to a re-rating that more PSU banks could be up on the blocks. And IDBI Bank right now is trading about two times price to book, whereas all other PSU banks trade about one, max 1.5 times price to book. So from that perspective, that is a shorter term re-rating trigger for most of these PSU banks. If that doesn't happen, I don't see much re-rating. Growth type of returns will come in from all of these banks. There's no mispricing as such in PSU bank, because PSU, the market has this fear that government control over PSU banks will then mean that growth may be hampered because the government has other interests. So from my perspective, re-rating is done. Growth type of return will also come from PSU banks, although they have outperformed over the last 6 to 10 months. I don't think that major outperformance in the longer term can be given with respect to private sector banks. And IDBI's um, IDBI's divestment can be a major trigger for PSU banks. Great, right. So, like, historically, if we look at, like, Kotak Bank used to trade somewhere around 4.5 time price to book, right? Currently, it's trading around 2.5 time price to book. So, how do you look at, like, the value proposition for maybe Kotak Bank and Axis Bank? It's also trading around somewhere 2 time price to book, right? And Yeah. whereas So IDBI is for also Kotak trading Bank, around, yeah, 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 yeah. my So question. yeah. So for Kotak Bank, you should always trade at about 5 to 7 times price to book. That was the Uday Kotak premium that the bank really used to get, because Uday Kotak practically is Asia's richest bank, Asia's best banker. Market all used to always believe that once Uday Kotak lends, the chances of NPAs are really very low. So that was the premium that Kotak Mahindra Bank used to always get. Now with Uday Kotak really gone, and a lot of top management only also gone. For example, Manian has gone to Federal Bank. Shanti Embakaran, their deposit head, is also moving away. So a lot of his team is unraveling, and new team is coming in. Because new team is coming in, that Uday Kotak premium valuation that was there, that is sinking, and the stock is undergoing a major time correction. But time goes on, the stock does not do anything. That is what is really happening in Kotak. Uh, is the stock really cheap? Answer is no. Stock is still expensive. The market is waiting to see how the new management shapes up the bank before taking a call as to what kind of a valuation that Kotak really wants to have. Also, with this, as I said, Kotak seems to be the front runner for the assets of IDBI. If that merger goes through, I think in the near term, Kotak will have a difficult time merging and integrating IDBI's book with itself. But over a longer period of time, that is a real positive, as IDBI Bank comes with a 3 lakh crore deposit franchise, which is huge for a bank like Kotak, which has around 3.5, 4 lakh crore of uh, 4 lakh crore of deposits. So nearly about 100% of their deposit will shoot up. So Kotak's size will double overnight, but merger integration issues will always be there. Kotak has a history of mergers. With ING Veste, it took about 2 to 3 years uh, to stabilize the merger. And here, since it is a much larger book, it will take time. Now coming on to Axis Bank. Axis is a good franchise, great franchise. Amitabh Chaudhary is building a good franchise. Last quarter, they reported issues with respect to the provisions, and that was a direct fallout of what happened at IndusInd Bank. So, from my perspective, Axis is the lowest priced with respect to price to book uh, franchise amongst all of the larger private sector banks, but it also has lower growth with respect to all other private sector banks. So I will keenly watch for Axis. Axis has the potential to do really well. Axis Max Life merger also puts in a feather for Axis.
So Amitabh Chaudhary is building a good team. Axis should continue to do well, but major surprises should not come over the period of next 2 to 3 years. From my perspective, Axis is a good candidate within the larger banks to do well over the period of next 2 to 3 years. Okay, and any views on IDFC First Bank? Right, again, it's a well-tracked bank, right? And we Vaidyanathan is Yeah. also followed well. So, like recent equity dilution that the capital that they raised, and the issues that they were Mm, facing in their uh, SME lending that they mm, were doing. So, how do you look mm. at that as a lending franchise? So IDFC First Bank. Again, it's a story of borrowing at higher interest rate at about 6 to 7%, and lending at about average interest rate of 14 to 15%. So again, highly risky book. When you do that, you are not competing with the larger banks. You are competing with tier two, tier three crowd, where the risk of NPA is much higher than it is for the larger bank. So that is point number one. The risk model of that bank is higher. Uh, Once the risk model is higher, you also have to pencil in higher NPAs. Nobody could see, but microfinance and micro loan NPAs for IDFC First Bank rose as the cycle deteriorated. Once the cycle deteriorated, they stopped microfinance lending. So from my perspective, when the going was good, they took some bit of risk which didn't play out properly. Over a period of next 2 to 3 years, Vaidyanathan is willing to diversify the book to home loan and secured products as well. At the same time, integrating it with the unsecured book. So, from my perspective, his experience of building capital first does help them a lot. They will do well over the period of next 2 to 3 years. The stock, to my mind, doesn't is not cheap, given the highly risky book that they really carry. Mind you, a bank lending at about 14, 15, 16% is carrying a lot of risk. So, from my perspective, the bank will do well. Vatanathan is a good leader. His guidance of NPS is something that I've called out multiple number of times. Bank management should not give guidance towards NPS. They should concentrate towards building the book, and NPAs are just a consequence of how they will lend. Also, amongst all the top private sector banks, I think that IDFC First Bank has the best technology platform, best technology investment. It continues to keep investing heavily in the technology part of it. So, from my perspective, given the next 2 to 3 years, I think they should do well because the micro lending and the unsecured cycle will also settle down, and they should do well. But mind you, again, that stock is also not cheap. That stock is also really very expensive. Right. So Aditya, like in the last thing that like we have been discussing for last 10 minutes. So how do you actually value these private sector bank versus PSU banks? Right. Is there any price to book range that you would like to call out? Like, how can investor understand whether a bank is trading at a much cheaper valuations or it's expensive that need to be traded with caution? देखो यार, प्राइस टू बुक जो है ना, प्राइस टू बुक जो है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट के लिए. ठीक है. Right. प्राइस टू valuation in any sort of equity investment that you really do, price to earnings, price to book, price to sales is an outcome of a lot of other things, right? Yes. For example, what kind of a management is there? What kind of a book the management is really running? It is secured, unsecured. What kind of a brand franchise does the bank really have? What is the cost of funds that the bank really has got? What is the yield as in end loan कितने इंटरेस्ट रेट पे बैंक दे रहा है, बैंक का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, पास्ट परफॉर्मेंस इन द सेंस दैट how has the bank track record been with respect to NPAs? So let me draw parallels here. उदय कोटक थे. उदय कोटक एक मास्टर बैंकर थे. वो उनको एक बार समझ में आता था ना कि यहाँ पे मुझे लेंडिंग नहीं करनी, वो नहीं करते. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. 2012, 2013, 2014 में
अ, बहुत सारे एयरलाइन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के एनपीए हुए। उदय कोटक उन सबसे बच गए क्योंकि वो कभी उससे उन सेक्टर्स में लैंड ही नहीं करते थे। So because the market understood that he was very prudent, he was very cautious with respect to how he lent. Of course, he gave up a lot of opportunities as well on the unsecured loan side of it, which HDFC Bank did really well on. But then that was his trade-off that मेरे को एनपीएस नहीं चाहिए, मैं ग्रोथ चेज नहीं करूंगा, और मुझे जहाँ पे समझ में आता है मैं वहाँ पे लेंड करूंगा, एंड दैट इज वाई द वैल्यूएशन ऑफ दैट स्टॉक रोज टू अबाउट 5 to 7 times price to book. And today, when once he's gone, that valuation is correcting because now the market does not really understand नई management क्या करेगी. So valuation is a factor of a lot of things: management, book, kind of people that you've got, uh, your past track record, your cost of funds. तो प्राइस टू बुक वैल्यू वहाँ पे डिसाइड होता है विद रिस्पेक्ट टू अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स. इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड बेट एज इसका प्राइस टू बुक वैल्यू ये होना चाहिए, इसका प्राइस टू बुक वैल्यू वो होना चाहिए. द ओनली thing that you can really say is PSU banks हैं, PSU banks are trading at a discount to private sector banks. वो एक रीज़न है, वो एक रीज़न है क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है उन इन रनिंग ऑल ऑफ दीज बैंक. एंड गवर्नमेंट का इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी शेयर होल्डर के अगेंस्ट कहीं ना कहीं होता है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ पब्लिक वेलफेयर. गवर्नमेंट को करनी है पब्लिक वेलफेयर, और कहीं ना कहीं वो बहुत सारे लोन्स होते हैं जैसे कि मुद्रा लोन्स हैं. तो वो अगर वो फोर्स करती है पीएसयू बैंक्स को देने के लिए, मेजोरिटी ऑफ देम टर्न आउट टू बी एनपीए. So there's a reason why PSU banks trade at a discount to private sector banks or even a discount to their own book value, is because market the, is not satisfied with government ownership, and market always fears that अगर गवर्नमेंट ने पीएसयू बैंक्स को बोला लैंड करने के लिए और वो एनपीएस हो गए तो फ्यूचर में एनपीएस बढ़ेंगे. So for that matter, SBI also trades at about 1.5 times or 2 times price to book, whereas SBI has gone. सबसे क्वालिटी फ्रेंचाइज इस कंट्री के अंदर एसबीआई का है. इवन एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ क्वालिटी फ्रेंचाइज. अगर आप किसी को भी बोलोगे तो सबसे पहले आपको पैसे कहाँ रखने हैं अपने, तो हमेशा लोग बोलेंगे कि मुझे एसबीआई में ही पैसे रखने हैं. तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दैट इज वन थिंग फॉर श्योर, दैट वो डिस्काउंट हमेशा रहेगा. दैट डिस्काउंट कैन बी ब्रीच्ड इफ द गवर्नमेंट ब्रिंग्स इन मोर ट्रांसपेरेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस और डाइवेस्टमेंट. बट ट्रांसपेरेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब ये होएगा कि गवर्नमेंट लूज आउट कर जाएगी अपने कंट्रोल को प्राइवेट सेक्टर बैंक के ऊपर, ऑन पब्लिक सेक्टर बैंक, सॉरी. बट गवर्नमेंट वो नहीं चाहेगी क्योंकि गवर्नमेंट के खुद के अपने एजेंडास हैं टू पुश लोन्स, टू गिव वेवर्स एंड ऑल दैट स्टफ दैट इज देयर. So, net net summarizing it, price to book is an outcome of a lot of things. It is not just one thing. You have to look at management and all those other aspects and then decide what kind of a price to book multiple that you tend to give for a bank. So today, finally ending this, today IndusInd Bank is trading below its book value. It is trading below its book value, although a lot of its assets are really good. It is trading below its book value because market doesn't understand A, अभी और कितना NP आना बाकी है after all the fiasco. And B, also market does not really understand IndusInd Bank. Whole host of management changes have happened in IndusInd Bank. Nobody understands as to how the new management will proceed, and the new management also hasn't convinced or given any convincing ideas about their idea of the future. You cannot blame them if they have been in the bank only for 30 to 45 days. So from that perspective, that is why the valuation is really very low. Now, as the management continues to convince investors that they are willing to do well, then the stock price valuation will come back to 1.5, 2 times. But right now, the market is really very confused, and that's how valuation multiples really work. Great, great, great. Yeah, it's great to understand, and it's really helpful. Like we cannot see price to book in isolation, and there are a lot of other nuances that one need to go through. So Aditya, moving to the next part of like financials only, there are a lot of NBFCs, right? So which pockets in NBFCs you think like are maybe well priced or attractive at this point of time and could create a decent alpha in next maybe 5 to 6 quarters? So, NBFC is a space where
where a lot of traction is there. It will be there. A lot of NBFCs have started to do well. For example, Aditya Birla Capital or an L&T Finance Holding. All of them are started to do well. From my perspective, banks continue to be my topic. When you come to micro lenders, I look at NBFCs because micro lending एक बहुत ही खराब गेम है माइक्रो लेंडिंग 25 30 35% के इंटरेस्ट रेट पे lenders give loans and a lot of things need to be done while you are an NBFC that you cannot do in a bank. So while I go to microfinance lenders, I always tend to look at NBFCs because there a lot of rules are very lenient for NBFCs, but they are very strict for bank. So point number one, microfinance lenders you can look at within the NBFC space. Then the gold lenders, of course, someone like a Federal or a CSB are doing pretty well within their gold lending side of it as well. वो banks बहुत अच्छा कर रहे हैं. In fact, their loan growth is about 35-40%. But mind you, gold prices are also moving up. One needs to keep that in mind. Companies like Muthoot is doing pretty well with respect to their gold loan, but the stock is super duper expensive. If you then look at within the NBFC space, if you then look at the CV financiers, they are also doing pretty well. So इन सब पॉकेट्स में आप देख सकते हो कॉन्ट्रा ही है, काफ़ी सारे कॉन्ट्रापिक्स भी हैं जहाँ पे एनबीएफसीज को प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। पर पीपल शुड कीप इन माइंड दैट एनबीएफसीज को 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स प्राइस टू बुक पे अगर आप बाय कर रहे हो, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिल्कुल ज़ीरो है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपने ग्रोथ ग्रोथ उनकी 30, 40, 50% है, तो मैटर नहीं करता है कि आप 4 टाइम, 5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे बाय कर रहे हो। बट लेंडिंग एक डिफरेंट गेम है। अगर आप 30-40% ग्रो करोगे और चौथे साल में अगर आपके एनपीएस बाहर आ गए, तो क्या होगा कि सारा प्रॉफिटेबिलिटी उड़ जाएगा, कंपनी लॉस में जाएगी और बुक वैल्यू अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। अब तो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, डोंट चेज विद इन द एनबीएफसी हाई लोन ग्रोथ कैंडिडेट. Try to chase where you are very confident that their asset quality will hold up even in bad times. That is how you should approach एनबीएफसी lending. एनबीएफसी के रूल बहुत लैक्स हैं और अभी माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग में बहुत सारे लोग कट आउट हो गए हैं. So, from my perspective, I keep saying that don't buy NBFCs at 2, 3, 4 times price to book. They're super duper. Of course, Bajaj Finance is a separate story. That is also super duper expensive. But उनका बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है और वो बहुत डाइवर्सिफाइड बुक चलाते हैं. तो वो सेपरेट स्टोरी है. But other than that, don't try to buy NBFCs at a very high valuation. Right. So in Aditya, in terms of affordable housing, right, there has been a lot of chatter around that. So most of the companies are growing at 25-30%. So any outlook on smaller NBFCs in affordable housing segment? यार अफोर्डेबल हाउसिंग में दो चार कंपनियां हैं एनबीएफसी स्पेस में, बट वो भी बहुत एक्सपेंसिव कंपनीज हैं. तो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, it doesn't make sense to only go and invest in affordable housing finance companies. मेरा सेंस है, ऑफ कोर्स टू गिव अ डिस्क्लेमर, आई रिजर्व द राइट टू बी रॉन्ग. बट जितना मुझे समझ में आता है, रादर देन गोइंग फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज एट अबाउट 3, 4, 5 टाइम्स प्राइस टू बुक, आई वुड रादर देन टेंड टू गो फॉर अ नॉर्मल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिसका फ्रेंचाइज अच्छा है और जो अफोर्डेबल हाउसिंग भी करता है. बजाज हाउसिंग है. टू सम एक्सटेंट अब एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक मर्ज हो गए हैं, तो वहाँ पे एचडीएफसी बैंक की अब बहुत बड़ी बुक हो गई है. एचडीएफसी लिमिटेड की जो बुक थी वो एचडीएफसी बैंक की हो गई है. और उसका बहुत बड़ा पार्ट एक अफोर्डेबल हाउसिंग भी है. So from my perspective, I'm not too much enthusiastic only on affordable housing. Housing as a lending space is attractive, but not particularly only affordable housing. एक कॉम्बिनेशन रहेगा तो बेटर रहेगा. मेरे हिसाब से आई एम नॉट टू मच पॉजिटिव. Great. Great. So any other segment, like if you want to talk about like investment banking as a space or a No, so sounds like if gym. you, yeah, so within the financial services space, apart from lenders, there are many other aspects to it, like the depositories that are there. NSDL, CSDL is there, and there are brokers, and there are mutual fund companies that are coming up. So, capital markets, basically, those are capital market schemes. They look good.
Capital market themes look good, but most of them are really very expensive. You've seen Grow list at about a valuation of 1 lakh crores. That is super duper expensive. As uh, on as with such IPOs, they will take a certain amount of time before they start to move up. Financialization of savings is a strong theme that will play out in the next 20, 30, 40 years. But in the shorter term, let's say next 2, 3 years, some stocks have risen dramatically. Some stocks are trading at about 80, 90 times price to earnings. For example, the depositories are trading super duper expensive. They will continue to do well, but the valuation leaves no margin of safety. If you're trying to have safe investments, those are not really very safe investments per se. They could undergo some bit of time correction before they start to move up. That is one. Again, on brokers, I'm not too much positive after what Grow's listing. People keep saying that Angel One, comparing Angel One with Grow, and then say that Angel One is undervalued, but Grow itself is overvalued. From my perspective, at about 1 lakh crores, even though it is the number one broker in India today, it is super duper expensive. Any correction in the market or any year of negative returns would see trading volumes go down a little bit in the shorter term. That could lead to a certain amount of correction. So, from my perspective, capital market theme, अच्छा theme है, good theme है. I will tend to play that through a mutual fund route. Mutual fund SIPs are strong, and some of the companies uh, have taken a correction and will take a correction as SEBI continues to regulate the expense ratio of all of these companies. That is something that is interesting, and that is something that I want to watch out for. But as such, overall, very positive on the uh, entire financial. Right. So, Aditya, any like in this GST cuts, right? GST on income tax has been waived off. So, any outlook on term plan or the life insurance companies? Yeah. So, life insurance and now health insurance companies are also listed. Health insurance and life insurance is particularly a difficult business. Why is it a difficult business? Is because none of the companies really has a moat. अगर स्टार की पॉलिसी आप खरीदते हो तो आप नीवा बुपा की भी खरीद सकते हो, आप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की भी खरीद सकते हो. Similarly with let's say a term plan. On a term plan, if you buy with the ICICI Pru Life, you can also buy it with HDFC Life, and you can also buy it with Axis Max Life. So uh, the problem with insurance companies is insurance as a sector will continue to do well, but most of these companies are not trading cheap; they are trading really very expensive. And health insurance side of it, the general insurers, that's really a tough business. Claim surge. अभी हम देख रहे हैं, if you look at Star Health, that stock listed 5 years ago, and it has not even given 0% return. It has given minus about 40 to 50% return. Because claim surge हो रहा है, claim surge हो रहा है within the entire country, and there's particularly no more tassel that the company really has got. So from my perspective, जनरल इंश्योरर्स विल कंटिन्यू टू फेस दैट डिफिकल्टी. क्लेम सर्च की वजह से उनको प्रॉब्लम होगी. लाइफ इंश्योरेंस स्टिल आई एम पॉजिटिव ऑन. लाइफ इंश्योरेंस विल कंटिन्यू टू डू वेल as as customer awareness about term plan continues to keep move up. They will continue to do well, but again, all bigger companies continue to trade at very expensive valuations. So from that sense, uh, positive, but little bit positive on the life insurance side of it, where growth, uh, um, due to awareness about term plan, will continue to drive these insurers forward. But price to embedded value देखते हैं यहाँ पे. uh, um, Insurers trading at about 2, 3, 4 times price to embedded value are the expensive ones and are a clear avoid. Right. So, like Aditya, basically, how do you? So, if someone wants to understand this space, right, in a lender space specifically, we talk about. So, how should one go about researching the stock, and how should they understand how the quality of the lender is? Right, because lending is a more of a commodity business, and real risk lies in getting the money back. So, can you share the framework, like how which a maybe newbie investor can go and understand the banking as a sector? ये तो अभी That's 1 घंटे only वाली brief. बात है. ये तो You अभी know, एक like घंटे four वाली or बात है. five checklists that you Yeah. can share.
Yeah. So I'll simplify it straight away. Lending is all about management. Lending is nothing else than management. बाकी सारे जो रेशियो, जब भी मैं किसी टीवी चैनल पे पूछता हूँ तो जाता हूँ तो वो मुझे पूछते हैं एनआईएम क्या है, एनआईएम क्या है। मैंने बोला ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। मैटर एट द एंड ऑफ द डे करता है एसेट क्वालिटी क्या है। अगर एसेट क्वालिटी अच्छी है, इंप्रूव हो रही है, कंट्रोल में है, तो बाकी सारे पैरामीटर्स मार्केट अपने आप एडजस्ट कर लेगा। The market only cares about, my experience over the last 10 years is market does not care about NIM, NII or any of those things. Market cares about asset quality. भाई तुम्हारी एसेट क्वालिटी अच्छी है तो मार्केट तुमको रिवॉर्ड करेगा। सेम SBI यूज टू ट्रेड 200 रुपये और सेम SBI आज 950 1000 रुपये के आसपास। क्या चेंज हुआ? चेंज सिर्फ इतना हुआ कि एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है SBI के अंदर। SBI के ROAs एंड ROEs आर एट लाइफ टाइम हाई। SBI की पूरे हिस्ट्री में 150 साल की इंस्टीट्यूशन है SBI। पूरे हिस्ट्री में इतना इतना अच्छा ROE ROA नहीं आया। वो क्यों है? वो सिर्फ इसलिए है कि लोन लॉसेस जो है वो बहुत कम हुए हैं और प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ी। तो टू पुट इट इन वेरी सिंपल वर्ड, द एबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू कंट्रोल NPAs then decides A, valuation multiple, and B, future stock price returns and future earning growth of the company. Now, how does the management control the asset quality? Management controls the asset quality by trying to diversify the book. The book has to be really very diversified. सिर्फ आप माइक्रो लैंडिंग करोगे ये बोल के कि मेरे को 30% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, बट वहाँ पे सबसे ज़्यादा NPS भी वहीं पे है। सिर्फ आप अगर होम लोन कर रहे हो तो आपका रिस्क बहुत कंट्रोल्ड है, बट आपका इंटरेस्ट रेट भी कंट्रोल्ड है। अगर कोई अच्छा बोरोवर है तो उसका होम लोन इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नहीं होगा, 9 10 11% के आसपास रहेगा। उससे ज़्यादा वो देगा नहीं कभी, क्योंकि उसको पता है कि वो एसेट बैक सिक्योरिटी है और एसेट बैक सिक्योरिटी में अगर आप वो टॉप टॉप बैंक के पास जाओगे तो आप बैंक के पास एबिलिटी है आपको 9% इंटरेस्ट रेट 10% इंटरेस्ट रेट देने की। SBI आज आज की डेट में बोरो करता है। आपके मेरे पैसे जो डिपॉजिट में पैसे हैं SBI में, 4 साढ़े 4% है उनका कॉस्ट ऑफ फंड, 4% के आसपास है। राइट? तो वो अफोर्ड कर सकता है अपने कॉस्ट के बाद भी ना 8 9% पे लेंड करना। बट एक IDFC फर्स्ट बैंक है, वो खुद ही बोरो करता है 6.5 7% पे। वो अफोर्ड नहीं कर सकता आपको 9% पे देने के लिए, बिकॉज उसके खर्चे ही नहीं निकलेंगे। उसके उसको जो सारे कॉस्ट उसके ऐड होते हैं वो नियरली अबाउट 13 14% के आसपास होते हैं। तो दिस इज वेयर द मैनेजमेंट कम्स इन एज टू हाउ टू लैंड, व्हाट टू डू, कैसे खर्चे निकालने हैं, किस तरीके के borrower को लोन देना है, क्या करना है आगे जाके। So management is one of the most crucial aspects of lending that decides everything, and eventually the price to book and the valuation is also decided by the management. तो हमेशा किसी भी मैनेजमेंट को ध्यान रखिए, बात कीजिए, देखिए वो क्या बोल रहे हैं, इरेशनल प्रोमिसेस दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, कैसे वो बैंक को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो डिसाइड करेगा आपका प्राइस टू बुक। Right. So, any good management that you would like to highlight, like only on the management part, like the ICICI Bank management is decently well. So, anyone in smaller banks, like Federal or So yeah, so Federal Manian practically was a joint managing director with Uday Kotak. He's come into Federal. He's trying to, if you look at Federal ka call, he's trying to diversify his book। श्याम श्याम श्रीनिवास थे जो फेडरल बैंक के, वो बहुत कंजर्वेटिव थे। तो फेडरल की जो बुक है वो बहुत कंजर्वेटिव बुक है, तो वहाँ पे NPA ज़्यादा नहीं होते हैं। So Sham is also, so Manian is also trying to balance that book with some risky loans as well as gold loans which are very less risky। तो ये मैनेजमेंट का कॉन्शियस डिसीजन है, क्योंकि उनको ROE ROA स्ट्रॉन्गर करना है बैंक का, और उनको स्टॉक प्राइस पर्सपेक्टिव से बैंक को रीरेट करना है। तो ये मैनेजमेंट का कॉल है, और वो सोचते हैं कि वो NPS को भी कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप राइट टाइप की लेंडिंग करोगे तो। So, Manian is really changing what is happening at Federal Bank. Next, if you look at CSB Bank, ठीक है। CSB बैंक के जो CEO है उनका नाम मैं एक सेकंड बताता हूँ आपको। आई फॉरगेट हिज नेम। CSB बैंक के जो CEO हैं वो भी कुछ ऐसा कर रहे हैं, वो भी कुछ चेंज कर रहे हैं पूरे बैंक को। CSB Pralay बैंक में के Mondal? पहले क्या, हाँ प्रलय मंडल, मिस्टर प्रलय मंडल। सो प्रलय मंडल यस बैंक से आए, एक्सिस बैंक में गए, फिर एक्सिस बैंक से इधर आए।
अब वो क्या कर रहे हैं, सीएसबी बैंक में कोई डायरेक्शन नहीं था पहले, सीएसबी बैंक ऐसे ही चल रही थी, बट अब वो डायरेक्शन लेके आ रहे हैं बैंक के अंदर। वो गोल्ड लोन पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। वो ऐसे बंदे हैं जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो रिस्क ना लेके बैंक को ग्रो करना चाहते हैं। तो प्रलय मॉडल ऑल्सो हैज़ अ डायरेक्शन। ही इज़ अ वेरी रिस्क अवर्स गाय। मनियन इज़ अ रिस्क टेकिंग गाय। ठीक है। वैद्यनाथन इज़ अ रिस्क टेकिंग गाय। तो आपको हर एक मैनेजमेंट का पूरा पूरा जो सिनेरियो है वो बहुत डिफरेंट है। सम बैंक्स वांट टू टेक वेरी हाई रिस्क, सम बैंक डोंट वांट टू टेक अ रिस्क। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव करंट मैनेजमेंट में यू हैव टू पिक एंड चूज एज टू मैनेजमेंट गाइड कहाँ कर रही है अगले 3 से 5 साल में। अभी मैं आपको एक एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। बंधन बैंक है। बंधन बैंक listed at about 200 300 rupees, went all the way up to 700 rupees and now is trading very low. तो बंधन बैंक पहले चंद्रशेखर घोष हैं उनके फाउंडर हैं। ही इज़ अ ग्रेट मैन। तो ही प्रैक्टिकली डिड माइक्रो लैंडिंग, क्रेजी माइक्रो लैंडिंग इन आसाम बंगाल। वहाँ पे जेएलजी लैंडिंग उन्होंने बहुत, वहाँ पे उनके बहुत एनपीएस बने। अब नई मैनेजमेंट आके बंधन बैंक में ये चेंज कर रही है कि अगले 5 साल के अंदर नेक्स्ट 5 ईयर प्लान फॉर बंधन बैंक इज they want to build a mix of secured and unsecured. Of course, they took over, grew also, grew उनका हाउसिंग फाइनेंस पार्ट, हाउसिंग फाइनेंस का इम्पोर्टेंट पार्ट था, बट दे आर डाइवर्सिफाइंग अवे फ्रॉम द माइक्रो लेंडिंग बिट ऑफ इट, बिकॉज माइक्रो लेंडिंग आपकी बुक को बहुत ही सिक्लिकल कर देती है। बहुत ही सिक्लिकल करने के बाद जब भी एनपीएस आते हैं तो बैंक बैंक की लिक्विडिटी सॉल्वेंसी पे सवाल आते हैं। तो इसके लिए मैनेजमेंट एक कॉन्शियस डिसीजन लेके अपनी बुक को डाइवर्सिफाई करके रिस्क को कम करने की कोशिश कर रही है। कॉन्शियस मैनेजमेंट डिसीजन। फाइनली, बिफोर आई क्लोज दिस, वी शुड सी द एग्जांपल ऑफ द आरबीएल बैंक सीईओ। आरबीएल बैंक के जो पुराने सीईओ थे, विश्ववीर आहूजा करके थे। वो उस बैंक को वो उस बैंक में क्रेडिट कार्ड लोन्स क्रेजी की तरह दे रहे थे, और माइक्रो फाइनेंस लोन्स, एमएसएमई लोन्स क्रेजी की तरह दे रहे थे। सो दिस इंक्रीज अ लॉट ऑफ सिक्लिकलिटी इन द बुक। वो बुक जो है, प्रैक्टिकली एट वन पॉइंट द एनपीएस वर इन डबल डिजिट्स फॉर देम, एंड क्रेडिट कार्ड लोन्स वर वेरी हाई डबल डिजिट, 20% के आसपास उनको एनपीएस। आरबीआई ने देखा एक बैंक के अंदर इतनी सिक्लिकलिटी नहीं हो सकती है, बिकॉज अगर पूरा क्रेडिट कार्ड साइकिल फटेगा तो बैंक इंसॉल्वेंट हो जाएगा। तो क्या किया उन्होंने, उन्होंने विश्ववीर आहूजा को हटाया। उन्होंने अपना ही एक कैंडिडेट लेके आए वो। और अब जब बैंक स्टेबलाइज हो गया, उन्होंने एमिरेट्स एनबीडी करके, एमिरेट्स दुबई के होम ग्रोन फंड है, उनको अब वो प्रैक्टिकली वो ओनर है अब वो बैंक के, और अब वो नई मैनेजमेंट लेके आएंगे। So taking these important decisions are important. It crucially affects the future of the bank, the valuation of the bank, the price at which the bank can raise money per se. तो ये सब important bits by bits चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको ध्यान रखना है आपको while you go ahead and invest in any of it. Right. So, Aditya, any view on like Bank of India, Karnataka Bank, or Canara Bank? तो एज आई सेड, पीएसयू बैंक्स में अगर आप देखोगे तो एसबीआई के पास बॉब है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, देन कैनरा एंड यूनियन बैंक है। इन इन बैंकों के साथ प्रॉब्लम क्या था, इन बैंकों ने बाकी छोटे छोटे बैंक को के अंदर इनके साथ मर्जर हुआ। तो इनके साथ मर्जर हुआ तो उनके बुक के इंटीग्रेशन में बहुत टाइम लगा। तो क्लीनर बैंक, सम ऑफ द क्लीनर बैंक विल बी एसबीआई के बाद बीओबी और यूनियन एंड कैनरा बैंक। अब बात ऐसी है कि one of the other negatives for PSU bank is now the government is further saying that they will further merge some of these public sector banks. अगर फर्दर मर्जर होगा तो मेरे हिसाब से वो नेगेटिव है इन द शॉर्टर टर्म, बिकॉज अगेन मतलब बुक को मर्ज करके इंटीग्रेशन करने में टाइम जाएगा। तो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, if merger between PSU banks happens, negative for a lot of these PSU banks. If divestment happens, positive for all of these PSU banks. So that is something that you have to watch out for. Now coming to Karnataka Bank. Karnataka Bank lacks munch. Karnataka Bank lacks a good management who understands what to do. Their regional presence needs to be diversified aggressively across the country. So from my perspective,
I am waiting for some good management to come in and be really very aggressive on Karnataka Bank, which अभी तक नहीं हुआ है। और अब अभी तो ये नई मैनेजमेंट के साथ मुझे लग नहीं रहा है, बट हु नोज, वी नीड टू सी हाउ व्हाट आर देयर प्लान्स फॉर द फ्यूचर। Great, great. So Prince Bhai is also there. Prince, like if you have any questions or guys, please share your comments in. If you have any questions on banking or financial, please share in comments. And if not, then we will move to chemicals as a sector. नहीं, मेरा तो एक ही क्वेश्चन है आदित्य से, केमिकल कब चलेगा? पिछले 2 ढाई 10 साल से थका रहा है, तो इज इट द राइट टाइम, और दैट अगेन हैव सम न्यूएंसेस टू द सेक्टर? यार मैं बताता हूँ आपको, दीपक नाइट्राइट की ना, आई थिंक एक या दो क्वार्टर पहले एक कॉल हुई थी। पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर विच कॉल वाज दैट। उस कॉल पे जो उनके सीईओ है ना, तो आई एम वेरी बैड एट नेम्स, आई एम सॉरी, आई कीप फॉरगेटिंग नेम। मौलिक मेहता, या तो मौलिक मेहता ने ये कहा था कि एज द केमिकल सेक्टर कंटिन्यू टू डू रियली वेल, पीपल फॉरगॉट चाइना, एंड नाउ चाइना इज बैक इन द मार्केट एंड चाइना इज अग्रेसिवली डंपिंग एवरीथिंग दैट इट कैन। तो वो जो चाइना प्लस वन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एक्चुअली रिवर्स आउट हो गया है। और बिकॉज रिवर्स आउट हो गया है, फ्रॉम अ पीक मार्जिन ऑफ 20 से 25% ऑन अ कंपनी लाइक दीपक नाइट्राइट, वी आर डाउन टू अबाउट 9% ऑफ मार्जिन। तो एवरी कमोडिटी टाइप केमिकल जहाँ पे चाइना प्रेजेंट था, जहाँ पे चाइना प्रेजेंट है, वहाँ पे डंपिंग हो रही है। और डंपिंग हो रही है तो सीवियर मार्जिन इरोजन सब कंपनीज को फेस करना पड़ रहा है। इवन ऑफकोर्स दीपक नाइट्राइट इज अ ग्रेट कंपनी, ग्रेट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, बट कम एट द एंड ऑफ द डे बहुत बार मैंने हाईलाइट किया कि केमिकल कमोडिटी केमिकल है वो। तो all these commodity chemicals are facing Chinese dumping, which means severe erosion in margins. अब ये मार्जिन इरोजन तब करेक्ट होगा या तो चाइना डंपिंग करना बंद करेगा, जो कि हाईली अनलाइकली है, या फिर इन लोग का डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स स्पेशलिटी केमिकल प्रोडक्ट्स जो है वो ऑनलाइन आ जाएगा और वहाँ से वो बेचना शुरू कर दे। राइट। तो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव अभी कुछ कंपनीज का वो ऑनलाइन आने वाला है, कुछ कंपनीज का ऑनलाइन नहीं आने वाला है। तो ब्लैंकेट बॉटम आउट नहीं हुआ है सेक्टर के अंदर। कंपनी बाय कंपनी आपको जाना है और देखना है कौन स्पेशलिटी है, कौन कमोडिटी है, और कहाँ पे उन वो स्पेशलिटी केमिकल्स की तरफ जा रहे हैं, एंड वहाँ से आपको कॉल लेना है। इसमें एक और प्रॉब्लम ये भी है कि एग्रो केमिकल्स में काफ़ी स्लो डाउन आया है, और एग्रो केमिकल्स में स्लो डाउन आया है तो फिर और वहाँ पे प्राइसिंग प्रेशर कंपनीज को फेस करना पड़ता है। तो ब्रॉड बॉटम नहीं बना है, ब्रॉड बॉटम बनने में टाइम लगेगा। कुछ सेक्टर्स का बॉटम बना है, जैसे फ्लोरोकेमिकल्स का बॉटम बना है, एग्रोकेमिकल्स का बॉटम नहीं बना है। बेंजीन बेस्ड प्रोडक्ट का, फॉर एग्जांपल बेंजीन बेस्ड प्रोडक्ट में विनती को कभी प्राइसिंग प्रेशर फेस ही नहीं करना पड़ा, बिकॉज विनती के जो प्रोडक्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट हैं, और वहाँ पे मार्जिन इरोजन हुआ ही नहीं उनको। अबाउट 30% से वो 25% पे आए। वो तो अप डाउन में होता रहता है। So, as I think we have done a space on specialty and commodity chemicals also, commodity chemicals is at play here. Commodity chemicals are facing price erosion. They will continue to face price erosion, and shift of commodity chemicals towards specialty chemicals is what will get some bit of revenue back, some bit of margin back for these companies, and some bit of revenue growth as well. Right. So Aditya, अगर हम chemicals में बात करें, so let's go by sub sector, right? You mentioned fluorochemicals bottom has been made, right? So what about like companies in which are dyes and pigments, or maybe agrochemical के अंदर I think fertilizer space is doing well, but the company who are making into pesticides and herbicides, they are still in a lull period. So, How do you look so at is these space? तो इसका भी सब सेक्टर्स है यार। फ्लोरोकेमिकल्स में फ्लोरोपॉलीमर्स भी है और रेफ्रिजरेंट्स भी है। तो Yes. फ्लोरोपॉलीमर्स है जैसे गुजरात फ्लोरोकेम की बात कर रहे हो, वो प्रिडोमिनेटली फ्लोरोपॉलीमर्स में है। रेफ्रिजरेंट गैस में समथिंग लाइक एन एसआरएफ है, नवीन फ्लोरीन है। ठीक है, वहाँ पे कंपनी लाइक नवीन फ्लोरीन हु आर इन रेफ्रिजरेंट, दे आर दे आर फेसिंग अ डिमांड रिकवरी एंड स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन गोइंग फॉरवर्ड। बट फ्लोरोपॉलीमर्स है, वहाँ पे चाइनीज डंपिंग हो रही है। वहाँ पे अपेरेंट हो गया कि उनके पास कोई प्राइसिंग पावर नहीं है।
और चाइना आके वही फ्लोरोपॉलीमर्स डंप कर रहा है, एंड उनको प्रॉब्लम हो रहा है. So within the fluorochemical space as well, refrigerant gases, they are they are receiving good traction. Something like an SRF or something like a Naveen fluorine, they are receiving good traction. Fluorochemicals, अरे फ्लोरो जो केमिकल्स हैं वो फ्लोरोपॉलीमर्स केमिकल्स पॉलीमर्स, उसमें टाइम लगेगा उसमें. अभी आप देख रहे हो गुजरात फ्लोरोकेम को भी प्राइसिंग प्रेशर का इशू हो रहा है, एंड काफ़ी बेरिश कमेंट्री वो दे रहे हैं. अब सो सब सेक्टर्स देखोगे तो उस तरीके से आपको अप्रोच करना है कि कहाँ पे अपन जाए कहाँ पे अपन नहीं जाए. दैट इज वन. देन यू कम ऑन व्हाट वाज डाइज एंड पिगमेंट्स. तो डाइज एंड पिगमेंट्स में भी कुछ खास अच्छे रिजल्ट नहीं दिए हैं कंपनीज ने. अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज आर रियली स्ट्रगलिंग. मार्जिन इरोजन वहाँ पे भी चल रहा है अभी. तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निकल सेक्टर्स. डाइज एंड पिगमेंट्स में किसी कंपनी के पास कोई प्राइसिंग पावर नहीं है, कोई मोट नहीं है, पूरा कमोडिटी टाइप सेक्टर है वो. तो हैविंग सेड दैट, जब कमोडिटी टाइप सेक्टर में ऐसा कुछ होता है तो वैल्यूएशन काफ़ी स्टॉक्स के काफ़ी गिर जाते हैं. अभी वैल्यूएशन काफ़ी स्टॉक के गिरे हुए हैं. अच्छा अपॉर्चुनिटी है डाइज एंड पिगमेंट सेक्टर में, बट यू हैव टू बी वेरी कंपनी स्पेसिफिक देयर. अगर आप एग्रोकेमिकल्स की बात करो, across all companies everybody is reporting. पर्टिकुलर एग्रोकेमिकल्स बोलोगे, हर्बिसाइड पेस्टिसाइड्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और वहाँ पे मैं उसको उतना ट्रैक नहीं करता हूँ तो उसके बारे में तो मैं कमेंट नहीं करूँगा. बट विद इन द मेन एग्रोकेमिकल स्पेस देर इज अ मार्केट स्लो डाउन. मोस्ट कंपनीज across the spectrum, most companies are reporting a slowdown within the agrochemical space. एंड कंपनी ऐसा बोलती है कि एग्रोकेमिकल स्पेस लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर तक रिकवर करेगा, बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा. इट विल टेक एटलीस्ट 6 to 12 months फॉर द एग्रोकेमिकल सेक्टर टू रिकवर. बट कमेंसुरेटली बहुत सारे एग्रोकेमिकल स्टॉक्स में करेक्शन भी हो चुका है. So you have to look and pinpoint as to where you want to invest. But agrochemical slowdown will be there at least for the next 6 to 12 months. Right. Okay. So, like, and any view on basic chemicals like companies like Tata Chemicals, Aarti Drug? So as I said, RC reported good set of numbers, but that was driven by some of the capex that they really did. तो बेंजीन बेस्ड केमिकल्स अगर आप वो बोलोगे तो बेंजीन बेस्ड केमिकल्स हो गए, दीपक नाइट्राइट हो गया, अविनति हो गया, आरती हो गया. बेंजीन बेस्ड केमिकल्स में अगेन वही बात है. दीपक इज अ कमोडिटी केमिकल. विनती इज अ स्पेशलिटी केमिकल कंपनी जहाँ पे वो स्पेशलिटी केमिकल प्रोड्यूस करते हैं. तो कंपनी बाय कंपनी आपको देखना होगा कि वो कंपनीज क्या कर रही हैं. कमोडिटी केमिकल जहाँ पे भी है वहाँ पे चाइना की डंपिंग है. जहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल्स है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको. लेट्स टेक एन एग्जांपल. इसके बाद बेंजीन के बाद अमीन्स के बारे में चले जाते हैं. तो एट अ पॉइंट बालाजी अमीन्स हैड अ मार्जिन ऑफ अबाउट 30%. नाउ दैट इज डाउन टू अबाउट 18 17 18%. पहले वो गाइड करते थे 25 से 30% अपन मार्जिन करेंगे. अब वो गाइड कर रहे हैं अपन अभी 18 को भी उन्होंने नीचे कर दिया, 15% के ऊपर कर दिया. अब so from that perspective, again commodity chemical, he's seeing huge dumping from China, and because of that huge dumping from China they are facing a lot of pressure. So again chemicals में एज आई सेड चाइना प्लस वन थीम जो जो नैरेटिव बनी थी वो बहुत ज़्यादा फास्ट अनरेवल हो रही है. और वो अनरेवल होने की वजह से बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स में करेक्शन आया है. कुछ अट्रैक्टिव है, कुछ वहीं पे रहेंगे. अब आपको देखना है कि आप कैसे केमिकल को पूरा एनालाइज कर सकते हो, उसकी लाइफ साइकिल, उसके मार्जिन्स, उसकी डंपिंग. फिर वहाँ से आपको प्रोसीड करना है कि वो अट्रैक्टिव है कि नहीं. बट ओवरऑल आई थिंक द केमिकल सेक्टर स्टार्टिंग टू लुक रियली वेरी अट्रैक्टिव प्योरली फ्रॉम अ वैल्यूएशन. Right. So, आदित्य भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली लाइक एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन लिक्विड इपॉक्सी रेजन लाइक लगाया है ना ऑन द कंट्रीज लाइक चाइना, सऊदी एंड कोरिया. सो एनी व्यूज देयर? यार इसके ये ड्यूटी के बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा, बट मैं ये बता देता हूँ कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती रहती है और रिमूव होती रहती है अक्रॉस लॉट ऑफ केमिकल्स. और हर बार केमिकल कॉल जब भी हम कॉल करते हैं केमिकल कंपनीज के साथ तो
यही बात होती है कि जीओआई इज पुटिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन सम प्रोडक्ट और दी अदर। ठीक है, तो यू हैव टू बी माइंडफुल दैट ये ड्यूटी लग भी सकती है और ये ड्यूटी नहीं भी लग सकती है। अब तो अगर लग भी गई है तो उसको हटा भी सकते हैं। So from my perspective, don't depend your investment decisions on what is anti-dumping duty or what is not the anti-dumping duty. That is not in your control. What is in your control is trying to buy these companies at such a cheap valuation कि वहां से तो अब डाउन साइड इतनी कंट्रोल्ड है कि अपसाइड ही अपसाइड है। और बहुत सारे स्टॉक्स उधर रीच कर रहे हैं। काफी स्टॉक 30 40 50% करेक्शन पे अभी बैठे हुए हैं। So you have to be aware. Anti-dumping duty is good in the shorter term, but in the longer term, your investment decisions have to be with respect to the business of that company and how that business will ramp up over the period of next 3 to 5 years. Right. So ultimately, like, how do you exactly check? Like, do you like in this chemical sector, right? Are there any subsector which truly have high entry barrier business other than refrigerant gases business? So, is there any sector where one should start looking in the subsector? Can you repeat that? What did you ask? Can you repeat that? Uh, is there any subsector which have high entry barriers और या मार्जिन जहाँ पे रिकवर होने की सबसे जल्दी चांसेस है? Yeah, a lot of these sectors have are highly specialized as I said. विनती ऑर्गेनिक्स के बारे में देख लो आप। वहाँ पे कैसा है कि वहाँ पे विनती ऑर्गेनिक्स जो है एटीबीएस और आईबीबी इन दोनों प्रोडक्ट के अंदर है, और एटीबीएस में वो 80 to 90% मार्केट शेयर कंट्रोल करता है। और वो उस केमिकल के अंदर कोई और चाइनीज़ वगैरह, चाइनीज़ या किसी और कंट्री की केमिकल कंपनी नहीं आ सकती है, बिकॉज हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है और हाईली स्पेशलाइज्ड केमिस्ट्री है। तो इसमें व्हाट ऑल मैटर्स इज व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट। Chemistry of the product needs to be really monitored, seen, controlled, एंड देन यू हैव टू टेक अ कॉल। आपको समझ में ही आ जाएगा। आप 10 साल के अगर प्राइस हिस्ट्री पढ़ लोगे ना, वो कंपनी उसी प्रोडक्ट के अंदर है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो उसमें एंट्री बैरियर्स है कि नहीं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द अमीन। अमीन्स में उनके मार्जिन जो है 15 से 30% के बीच में हाईली वॉलेटाइल मार्जिन है, मतलब हाईली वॉलेटाइल है। कभी आज वो 15% पे बैठे हैं तो 2 साल बाद 30% पे भी बैठे हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। So, and if you then look at a company like Vinati Organics, their margin volatility is not that much. That is it, it's about 4 or 5% basis points. So then what happens is आपको समझ में आ जाता है कि these are that is not a company which is highly cyclical in nature, and there are very high entry barriers to that kind of a company. So margin volatility is something that will give you a clear picture about how the chemistry of the product really is, and it is a specialized chemical or a commodity chemical. ये एक मैंने स्टडी भी किया है। I put this study out as well, where I say that there are 4 or 5 things: ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन आपको देखना है, आपको एबिटा मार्जिन देखने हैं, आपको रिप्लेसेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट देखने हैं। जब आप ये सब चीज़ें देखते हो ना, आपको अपने आप समझ में आ जाता है कि वो कमोडिटी है या स्पेशलिटी है, और वहाँ पे रिप्लेसमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती। आई थिंक आई डिड दैट फेस विद प्रिंस ओनली। तो वो मतलब इट इज़ वेरी इजी टू फिगर दिस आउट दैट वो प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट है। और जब दीपक नाइट्राइड ऊपर जा रहा था तो मैंने एक थ्रेड लिखा था, मैंने उसमें कहा था कि इसकी 90% प्रोडक्ट जो है वो कमोडिटी प्रोडक्ट है। तो वो कमोडिटी प्रोडक्ट छुप जाते हैं जब मार्जिन बहुत हाई होते हैं। जब मार्जिन जब प्राइस नीचे आता है ना, तब आपको रियलाइज होता है कि इसके बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो कमोडिटी प्रोडक्ट है। और वो आसानी से पता चल जाता है जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते So मतलब आपका इसमें कोई जैसे आप केमिकल कंपनीज में if you want to invest, so is there any checklist that you follow? हो। या सो एज आई सेड, द चेकलिस्ट हैज टू बी फर्स्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द स्पेशलिटी एंड द कमोडिटी केमिकल। स्पेशलिटी केमिकल और कमोडिटी केमिकल में डिफरेंशिएट करने के 3 4 तरीके हैं। ठीक है, 3 4 तरीके वो है कि पॉइंट नंबर 1, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जिस भी कंपनी के अबाउट 60 से 70% के ऊपर है ना, वो कंपनी हाईली स्पेशलाइज स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है। अब अगर आप एबिटा मार्जिन की तरफ देखोगे तो एबिटा मार्जिन में
शार्प वॉलेटिलिटी है, बहुत शार्प वॉलेटिलिटी है, 15-20%, 15-20 बेसिस, 1500 से 2000 बेसिस पॉइंट्स की वॉलेटिलिटी है। तो फिर वो कमोडिटी केमिकल है। अगर वेरिएशन बहुत कम है तो कमोडिटी केमिकल नहीं है। आ, उस प्रोडक्ट की जो रिप्लेसमेंट है वो रिप्लेसमेंट ही नहीं है कहीं, या रिप्लेसमेंट बहुत हार्ड है क्योंकि उसको बहुत सारे चेकलिस्ट से गुजरना पड़ता है। तो वो हाईली स्पेशलाइज्ड केमिकल है। फॉर एग्जांपल, दीपक नाइट्राइड ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट बनाता है। वो ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट इस कंट्री और इस पूरी दुनिया में बहुत कम लोग बनाते हैं, और जो भी बनाते हैं ना उनको एक 4 साल की लाइफ साइकिल से गुजरना पड़ता है उस ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट को दीपक नाइट्राइड को सप्लाई करने के लिए। मतलब दीपक नाइट्राइड जिसको सप्लाई करेगा और उसको 4 साल के एक पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है फॉर वैलिडेशन। अब 4 साल का प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और हाईली अनलाइकली है कि उसमें जो उसमें जो केमिकल कंपनी खरीद रही है ओबीए को, ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट को, वो हाईली अनलाइकली है कि बार बार उसको चेंज करेगी, क्योंकि बार बार चेंज करना मतलब 4 साल के प्रोसेस से गुजरना। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, these are the things that you have to watch out for. Then the next thing that you have to watch out is साइकिल में आप कहाँ हो। अगर आप साइकिल में 2020 में खरीद रहे हो, जहाँ पे टॉप पे आप खरीद रहे हो, तो आपको नुकसान है। अगर आप अब खरीद रहे हो तो अभी आप कहीं बॉटम पे खरीद रहे हो, बट वो पूरा बॉटम अभी बना नहीं है, बॉटम अभी पूरा बनने में टाइम लगेगा। आई थिंक दिस ईयर, the whole of this year and maybe some part of next year will at least go in formation of a bottom. तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखनी है। फाइनली केपेक्स क्या है, मैनेजमेंट कैपेबिलिटी क्या है कंपनीज को एक्सपैंड करने की। जैसे कि यंग है, जैसे विनीति बुटरेजा सराफ जो है, विनीति ऑर्गेनिक्स के, वो बहुत यंग है एंड शी वांट्स टू स्केल अप द कंपनी। मौलिक मेहता है दीपक नाइट्राइट में, वो शी दे वांट टू स्केल अप द कंपनी, तो दे आर इन्वेस्टिंग वेरी अग्रेसिवली इन द केपेक्स। अब तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है एज टू व्हेन यू आर एनालाइजिंग अ कंपनी। Great, great. It's काफी insightful है, मतलब how everyone wants to go and like can read on their themselves. So Aditya, any other interesting business that you would like to talk about? Again, it's nothing a investment advice, just a business discussion if you want to have. If not, like then we can move to Q&A. Yeah, no, so from my perspective, as I said, financials is a great space. It's a growth space, whereas some bit of contrapick is the chemical space. Most people don't want to invest in chemical space, looking at the returns for the next 2 to 3 years. But I keep telling people, and I keep telling myself also, don't have a bias. Objectively try to analyze stocks. Don't get run away from the momentum as well, and don't get run away from the panic as well. Try to objectively analyze. केमिकल्स में बहुत पैसा है अगर आपने बॉटम ऑफ द साइकिल पकड़ लिया। केमिकल्स में बहुत सारा लॉस भी है अगर आपने टॉप ऑफ द साइकिल पकड़ लिया। सिमिलरली फाइनेंशियल्स में अगर आपने गलत लेंडर पकड़ लिया तो आप फंस जाओगे, और आपने सही लेंडर पकड़ा तो आप अच्छा कर। तो दिस इज व्हाट यू टू कीप इन माइंड। फाइनेंशियल्स में माइंड यू, माइक्रो फाइनेंस अभी बॉटम ऑफ द साइकिल पे है, वेराज वेराज लार्जर लेंडर्स आपको स्टडी रिटर्न देंगे, और पीएसयू एट द टॉप ऑफ देयर वैल्यूएशन साइकिल। Right. So if anyone has any questions, feel free to comment or maybe raise a speaker request also. So if Aditya, if you have time, can we take few questions? Hi, हेलो। what are your views on हाय finance? हाय हाय हाय, आई जस्ट लॉस्ट यू, कैन यू, whoever was asking, can you just repeat your question please? Yeah, hi Aditya. So I wanted to know what are your views on Yes Bank and Equitas Small Finance Bank, basically the small finance bank sector. यार येस बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक तो नहीं है, आप येस बैंक No, no, सेपरेटली पूछ रहे हो, राइट? I mean that is a separate question. I mean Yes Bank is one, and small finance bank sector is another ठीक question. है, ठीक है। यार येस बैंक है ना, येस बैंक में
एक फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है और वो उसका मोस्ट लाइकली प्रमोटर भी बन जाए, ठीक है। अब अगर वो प्रमोटर बन जाएगा तो बहुत सारी चीजें चेंज होंगी और किसी को नहीं पता है कि किस डायरेक्शन में चेंज होंगी। तो इट कुड बी पॉजिटिव ऑल्सो, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, बट टाइम विल टेल as to what will happen. So from that perspective, I don't know what will happen in Yes Bank. Future management changes, future investors coming into the stock will then determine the future of Yes Bank. तो अभी कैसा है ना, अभी वो पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक होने की वजह से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर उसमें स्पेकुलेट फंड करते हैं। बट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव आई डोंट नो व्हाट विल हैपन इन यस बैंक, so I will wait and watch in yes बैंक. That is one. अगर now if you talk about the smaller banks में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बोलो या एक्विटास बोलो या फिर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बोलो, ये हाईली रिस्की रिस्की बिजनेस मॉडल्स हैं इन लोग के। ऑफ कोर्स दे आर, बिकॉज दे आर स्मॉल फाइनेंस बैंक, दे हैव टू लेंड, उनके प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के गाइडलाइंस है आरबीआई के थ्रू, and also some of them are exposed to microfinance and unsecured side of the book really very aggressively. So from my perspective, I will look at them at the bottom of the cycle when their cycle is at a lifetime low, and which is right now at a lifetime low with respect to the unsecured side of it. So it is a good time to look at them. आप उनका वैल्यूएशन देखो, वैल्यूएशन ज़्यादा एक्सपेंसिव मत रखो, 1-1.5 टाइम प्राइस टू बुक पे अगर इनको खरीदोगे तो, अगर डिस्काउंट पे भी खरीदोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड फ्रॉम देयर ऑन यू हैव टू लुक एट दीज बिजनेस मॉडल्स एज दे मूव टू अप साइकिल, you have to sell them off. They will not, many of them will not turn out to be long term compounders. Many of them will turn out to be very cyclical in nature. Hi, are you there? Hello. Sorry, I was on mute. I was saying like there is one question on the comment section. So, what is the Right. views on glass lining company prospects? ठीक है. So they will to continue to do exceptionally well as chemical companies continue to do exceptionally well. वो भी अच्छा करेंगे. उनका पूरा फॉर्च्यून है वो केमिकल कंपनीज से लाइंड अप है, नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। जीएमएम फॉडलर तो ऐसी कंपनी है जिसने अब्रॉड में जाके एक टेक ओवर किया और वो बहुत सारी कंट्रोवर्सी में भी फंसे थे। So from my perspective, a lot of their fortunes will be connected to the growth of the chemical sector. Right now, the chemical sector is not doing too well, but over a period of time, as the chemical sector continues to do well, they will also do well. So that's how their fortunes are lined up. I think one question is, I don't think it's related to session, but how do you see dollar price going up and INR depreciating affects exports? यार आईएनआर तो देखो, ये है ना, एक मिसकंसेप्शन है लोगों का कि आईएनआर का भी डेप्रिसिएशन होने से रुकेगा बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन डिफरेंशियल बिटवीन द यूएस एंड डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। ये डेप्रिसिएशन तो होता ही रहेगा, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। अब ये क्या एक्सपोर्ट्स को अफेक्ट करता है? हाँ करता है भाई। तो imports become even more expensive. So from my perspective, that appreciation is always going to be there. Mind you, it affects a lot of chemical companies also because a lot of them import chemicals and also export finished products. तो दोनों तरह के एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, और तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो, बट डेप्रिसिएशन इज पार्ट ऑफ लाइफ एंड विल कंटिन्यू टू हैपन in my year practical in my this practically each year. Right. Yeah. So, Rajeshji, I have made you a speaker. Can you ask your question? So one more, in the meanwhile, Aditya, one more question in the comments. Like any views on Vishnu Chemical? I think it's into.
inorganic and Anupam Rasayan? And are there any trigger that you might think? यार विष्णु केमिकल्स को मैं ज्यादा इतना से ट्रैक नहीं करता, तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। अब बात रही अनुपम रसायन की। ठीक है, अनुपम रसायन हैज टेकन several bets within the battery manufacturing, which are going to be which will really pay off for the company in next 3 to 5 years. So from my perspective, that company will continue to do really well over the period of next 3 to 5 years. I'm positive. I'm looking at it. I don't have any exposure, but I'm tracking it really very close. Wait, guys, maybe we can avoid certain directly stock specific questions. If you have anything related to cycle or a particular business side, right, that would be welcome more. So I have made few other guys as a speaker. Hi Aditya, I wanted to have your views on two NBFCs which are kind of going through internal, restructuring. One is Poonawalla FinCorp and the other is the Religare FinServices. So, what's your view on these? यार किसी भी एनबीएफसी मतलब कोई भी एनबीएफसी अगर 40-50% से ग्रो कर रही है ना, आई एम टू अनकंफर्टेबल trying to hold that stock. That is one. And also when one NBFC is trading at about 4 to 5 times price to book, I am also very uncomfortable holding on to that NBFC. Bajaj Finance is a separate story. Not everybody is Bajaj Finance. That's how it is. That's what I want to leave and say. एंड अभी पूनावाला फिनकॉर्प के अंदर बहुत सारे स्लिपेजेस के इश्यूज आए थे। आई डोंट थिंक दैट रियली बोर्ड वेल। मार्केट ने उनको माफ कर दिया है, बट इतना फास्ट ग्रोथ मुझे डर लगता है, इतने फास्ट ग्रोथ से। दैट्स माय पर्सपेक्टिव अबाउट इट। 40, 50, 60% ग्रोथ इज रियली वेरी हाई फॉर अ कंपनी टू डाइजेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एनपीए। Yeah, like Sure, again, thank you. lending is a backdated business, right? So last two questions, if we can take, right? Vikrant, maybe you can go ahead. You are already a speaker. Thank you for the opportunity, Aditya sir. Thank you for doing this space. I have a question on two stocks. One is Bank of India and Ujjivan Small Finance Bank. Your views, please, on these. यार बैंक ऑफ इंडिया के बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। मैंने अपने पीएसयू बैंक के व्यू आपको बता दिए। हो गया है उन लोग का री रेटिंग हो गया है। अभी वेट करो कि आगे चल के गवर्नमेंट क्या मर्ज करती है बैंक को या फिर गवर्नमेंट डाइवर्स करती है, वो गवर्नमेंट के ऊपर है। वो ड्राइव करेगा मेरे हिसाब से पीएसयू लैंडिंग कहाँ पे, पीएसयू बैंक कहाँ पे जाते हैं। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी वो ड्रामेटिक शॉक से बाहर निकले हैं। नितिन चुग थे, वो नितिन चुग चले गए। फिर कोई सीईओ नहीं था। फिर इटेरा डेविस आए थे, अब इटेरा डेविस भी अब चले गए और नए सीईओ आए हैं। ठीक है। सो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव दे आर ट्राइंग टू, वो भी माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग के एक बहुत बड़े विक्टिम थे। माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग जैसे कम हुई वैसे, और माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग जैसे जैसे नीचे गई तो उनको भी प्रॉब्लम हुआ। अब वो लेके आए हैं मिस्टर संजीव नौटियाल को। इनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अब we have to see how they diversify the book. They are willing to, again, they are also willing to diversify the book to 50-50%. They've also gained a universal banking license. वो भी उनके पास है अभी। From my perspective, I am very cautious because स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो बुक रिस्की है। I will be very interested in buying the stock at about one time price to book, but I will not buy the stock at more than one time price to book per se.
Thank you, sir. Thank you. Hi, Aditya. Can I ask something? Yeah, please. Uh, Aditya, basically, I'm not a very, pro kind of investor. I don't get into much of, ratios and all this. But I'm a typically Marwadi guy who you understand the basics things of the like. When you go to Yeah. Europe and US, the most of banking there is into investment banking. India is being still a developing country are into a transactional banking. What do you mean by transaction? When you go to bank, you do NEFT, you deposit some cash, you withdraw some cash, something like that. But when you go to Europe, the banking ultimately in India will have to be into investment banking. So can you suggest me something like which is a company which is into investment banking, which is like I can catch them as young and maybe 5 year, 10 year down the line, I feel there's a great future for those companies. One of them on my trigger is Nippon. I'm holding it at a very basic levels, and that has turned into a multi-bagger for me. But any other company on your radar which you feel like is going to be into investment banking, which can serve a company like into Europe and US also? Yeah, these are two very different markets per se. European market or a US market is a developed market, and developed market में कैसा है कि most of the banking will be done online. More people don't need to go bank into a bank. बैंक में एक से दो लोग होंगे जो इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखते होंगे. बट इंडिया का मार्केट बहुत डिफरेंट चीज़ है. इंडिया का मार्केट कैसा है? Access to credit, access to banks is something that is not really there. So if you ask me, over the period of next 10, 15, 20 years, pure play lenders are going to make far more and far बहुत बड़ा पैसा प्योर प्ले लेंडिंग से प्योर प्ले ट्रांजैक्शनल बैंकिंग प्योर प्ले ट्रांजैक्शनल बैंकिंग से बैंक कमाएंगे और क्योंकि ये बिजनेस मॉडल कैसा है ना ये बिजनेस मॉडल आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का बिजनेस मॉडल देखो 8% पे लेते हैं और 16-17% पे इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं Hmm. और इससे भी ज्यादा बड़ी बात आप किसी माइक्रो फाइनेंस लेंडर की आप बात करोगे ना तो उनके लेंडिंग रेट जो है वो 30-35% पे है राइट Hmm. so today what is happening in India is access to capital is very scarce and it is really very expensive अभी मेरे को एक बात बताओ पूरे मार्केट में 20% आरओई पिछले 10 साल में सिर्फ एक ही कंपनी का है वो एशियन पेंट्स है मतलब Hmm. ये आपको बोल रहा है कि True. अगर आपने 100 रुपए लगाए तो 20 रुपए कंसिस्टेंटली हर साल सिर्फ एशियन पेंट्स Hmm. देगा बट यहाँ पे ये लेंडर क्या बोल रहे हैं मेरे को 35% इंटरेस्ट दो आप राइट तो एक्सेस टू कैपिटल इन अ कंट्री लाइक इंडिया is not at par as what is it in the US, in the European countries, and it will not get eased up in the next 10, 15, 20 years. ये एक बहुत लॉन्ग टर्म स्टोरी है आपके और हमारे चले जाने के बाद भी एक्सेस टू कैपिटल एक चैलेंज रहेगा इंडिया में जिस दिन ये एक्सेस टू कैपिटल का चैलेंज सॉल्व होगा उस दिन इंडिया डेवलप कंट्री बन जाएगी तो अभी नियर टर्म में तो ऐसा नहीं है ऐसा गवर्नमेंट बहुत ट्राई कर रही है मुद्रा लोन्स देने में उसमें चैलेंजेस ये है कि उसमें गौर लोग पैसे वापस नहीं दे रहे और वो एनपीएस क्रिएट हो जा रहे हैं so from my perspective pure play lending and transactional banking will be there now on the second question as to investment banking per se not many companies as such in India. Something like a JM Financial is there. Something like a Motilal Oswal is there. They will do pretty well, but वो इंडिया के आईपीओ ही संभालेंगे और अभी इंडिया में देख लो इंडिया के ही ट्रांजैक्शनल बैंकिंग इंडिया के ही इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करेंगे और मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अगर आप बोलोगे इंडिया में तो अगर आईपीओ के अंदर 400 इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऐसे ही ले जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि सेबी आके वहाँ पे रेगुलेशन ले आएगी कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स क्या चार्ज कर सकते हैं किसी भी आईपीओ के लिए तो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इफ Hmm. यू आर टू आस्क मी आई विल बी मोर पॉजिटिव ऑन द लेंडर्स ऑफ कोर्स दीज कंपनीज विल आल्सो डू वेल बट जितना पैसा लेंडिंग में है उतना पैसा कहीं नहीं है और इतना पैसा नहीं है इसलिए तो पूना वाला फिनकॉप लेंडिंग में गया है ना क्यों गया है वो लेंडिंग में क्योंकि जितना पैसा वहां पे उतना The, पैसा दुनिया में कहीं नहीं है लेंडिंग में the Pune wala FinCorp, Aditya, let me be, matlab, on my personal perspective, it's one of the best bet as of today because मैं तीन चार चीजों पे बैट करता हूँ हमेशा. वन, जब भी डरबी जीतनी हो तो जॉकी पे बैट करो. सेकेंडली, the owners or the promoters has to be deep pocket players, and third, they had to be ethically high. I know there's been bad names few days back, but वो छोटी मोटी चीजें वो चलती रहेगी. Poonawalla is one of the good, and especially they are going aggressively into gold loans. Gold loan being into private sector lending,
the high ROI return kind of lending, I think Poonawalla will do great in next 2 to 3 quarters from here. This is my personal views. I'm invested, so I may be a little biased on that part. Would request your views also. एज आई सेड, रिस्क रिस्क तब तक दिखता नहीं जब तक स्टॉक प्राइस ऊपर जाते रहता है। रिस्क तब दिखता है जब स्टॉक प्राइस नीचे चला जाता है। मेरे हिसाब से कोई भी लेंडर हो, कोई भी लेंडर हो, टुडे टुडे कोई भी लेंडर हो, वो 40-50% के पेस से अगर ग्रो कर रहा है ना, आई विल बी वेरी केयरफुल ऑन दैट लेंडर, बिकॉज आई डोंट थिंक you have the ability to digest that kind of a growth, that kind of future NPAs that are coming in. That is my perspective. और अभी 250 करोड़ का, 2500 करोड़ का उन लोग का जो किचन सिंकिंग हुआ था, क्या गारंटी वो आगे नहीं होगा? हो ही सकता है ना। इतने फास्ट आप ग्रो कर रहे हो और वो अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड दोनों में ग्रो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सिक्योर्ड में ग्रो कर रहे हैं, वो अनसिक्योर्ड में भी ग्रो कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज एनालिस्ट आर सेइंग दैट इट इज द नेक्स्ट बजाज फाइनेंस। क्यों है वो भाई नेक्स्ट बजाज फाइनेंस? आपको क्या उन्होंने ऐसा बता दिया कि वो मैं तो उनके उनके साथ कॉल्स भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ उनके साथ, मुझे तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं कॉल पे कि मुझे ऐसा लगे कि नेक्स्ट बजाज फाइनेंस है वो। नेक्स्ट बजाज फाइनेंस नहीं नहीं बनने के लिए अभी बहुत टाइम है, राइट? तो फ्रॉम माई नहीं नहीं। परस्पेक्टिव, पूरा किसी भी कंपनी को जज करने से पहले an entire seasoning or cycle of NPS has to happen, which takes about 4 to 5 years minimum. आई डोंट थिंक वैसा सीजनिंग ऑफ साइकिल अभी पुनावाला फिनकॉर्प के साथ हुआ है। पहले ही साइकिल के अंदर उनके राइट ऑफ्स हो गए थे बहुत सारे। तो दैट हैज टू हैपन। ऑफ कोर्स द स्टॉक प्राइस इज मूविंग अप, मार्केट हैज अ व्यू। आई विल एंड दिस बाय सेइंग दिस, आरबीएल बैंक का स्टॉक जो है, आई मेड अ मिस्टेक इन आरबीएल बैंक स्टॉक। आरबीएल बैंक का स्टॉक आईपीओ के बाद 250 से 700 गया, सब लोग उसको नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक बोलते थे। बट देन जब वो फूटा तो फूटा वो, right? And that's where I learned that you have to be very careful in lending. Too fast growth is not too cool, not too good. Steady, slow growth, which you can adjust, which you can eat, is something that the market will like over a longer period of time. For a shorter period of time, of course, the market will reward you, but longer period of time वो एनपीएस ही देखेगा। और अभी मुझे नहीं पता है कि वो किस तरीके के एनपीएस आएंगे पूनावाला फिनकॉर्प में। मुझे नहीं लगता कि मार्केट में किसी को भी पता है, वो टाइम के साथ पता चलेगा। Understood. Thank you. Great, Aditya. So, Vikrant, do you want to go ahead? Last question that we might take, or it's done already? I already asked. Thanks. Yeah. Okay. Okay. Thank you so much, Aditya, for Thanks. keeping our time right, and thank you so much for sharing your wisdom that you have accumulated over a period of time. Right. Thank you. Thanks a lot for hosting me. Thank you, Aditya. Thank you, everyone, for your time, and we will connect maybe after some time. Thank you. Bye.